Hello, good morning, everyone. Tamanna, Shaili, Sharita, Sanskriti, Raghav, Priyansh. After a long time, Muskan, Aman. अच्छा, कल आपने हिंदू में एक आर्टिकल आया था फेडरलिज्म के ऊपर पढ़ा? What is that? Stalin, yeah. What is that? What is his argument? Right, very good. Hmm. His quest was for, to re-examine the center-state relations and give more autonomy to the states. Right. Look at the changing scenario, and which changing scenario has needs to be, also, has a, should be its impact on a center-state relation. Look at center-state relation evolve in the context of independence, na the partition, ठीक है, India-China war. Look at Indian constitution is highly center biased. अब क्या है कि चीजें बदल गई है, राइट? तो बदलना चाहिए. फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशन शुड चेंज. और दूसरी बात क्या है कि बहुत सारी बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही डिडंट टॉक अबाउट दैट. जैसे सेंसर चार्ज बढ़ गया है, सेंटर यूनिलैटरली डिक्लेयर्स स्कीम्स, राइट? जब स्कीम्स सेंटर यूनिलैटरली डिक्लेयर करता है, राइट, तो क्या होता है, स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एग्जाम्पल, नरेगा खत्म हो गया, राइट? अब आ गया क्या है, विकसित भारत जी राम जी. ठीक है, अब विकसित भारत जी राम जी, इट इज अ सेंट्रल रूल, इट इज अ राइट सेंट्रल रूल, बट उसमें 40% पैसा किसको पे करना है? स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है भाई, और स्टेट गवर्नमेंट कहां से देगी इतना पैसा? आ जाइए, आ जाइए. गुड मॉर्निंग. जोसेफ कुरियन, जो हाई पावर्ड कमिटी है, headed by Joseph Korean, right? He was a retired judge of the court. उसको थोड़ा सा कोरियन कमिटी को नोट कर लेना, राइट? जो भी अभी आएंगे मैटर, ठीक है? और क्वेश्चन बिल्कुल कुछ ऐसा ही कंटेस्टेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है? कंटेस्टेड क्वेश्चन रहता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके साथ ही है, न्यू चीज जब आप पढ़ें तो उसको ऐड करें अपने नोट्स में, ठीक है? जो हाई पावर्ड कमिटी है, एक ही रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है उसका, राइट? जो कुछ आप मिले आपको उसमें ऐड करें, राइट? चलो, let me move to the agenda of the day, and today we'll talk about committee now, parliamentary committee. Today is February 18. Right. Now look at yesterday we talked about the basics of the parliamentary committee. There are, a parliamentary committee is a group of MPs who are assigned to particular work, and you have, two types of committee: ad hoc or standing committee. Standing committee are basically परमानेंट कमिटी, और एडहॉक कमिटी क्या है? टेम्पररी कमिटी है. यहाँ पर फिर हमने पढ़ा कि भाई स्टैंडिंग कमिटी के बहुत सारे स्टैंडिंग कमिटी होते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कमिटी, फाइनेंशियल कमिटी, राइट? कुछ कमिटी होती है जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर को देखती है. फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमिटी, बताया था ना, बस बताया था. एक नई बच्ची है इसीलिए बना रहा हूं, दूसरा कारण भी है. और एस्टिमेट कमिटी को क्लास लेना था, एस्टिमेट कमिटी. और तीसरा क्या आता है? पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, राइट? और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग.
अजय, अब इसमें से पब्लिक अकाउंट कमेटी हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा है एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, उसी को डिस्कस करना है, एस्टिमेट कमेटी को। एस्टिमेट कमेटी का अगर रूट्स देखेंगे हम तो फाइनेंशियल एस्टिमेट कमेटी 1921 में एस्टैब्लिश हुआ था, बट 1950 में जॉन मथाई के रिकमेंडेशन से एस्टिमेट कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, राइट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 after recommendation of John Mathai. Do you know who was John Mathai? He was the first finance minister. He resigned because of the planning commission. He was not happy with the planning commission. Planning commission was an extra constitutional body. ठीक है, तो जॉन मथाई को सही नहीं लगा, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। एनीवे, सो जॉन मथ, ये जो ऑरिजिन देखेंगे आप इस कमेटी का ऑरिजिन, तो क्या है, 1921 में था ये, जिसका नाम था फाइनेंशियल कमेटी। बट आप देखेंगे कि इट वाज सेट अप इन 1950, राइट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई, राइट, द फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, इसके मेंबर कितने हैं, कंपोजिशन में आ जाओ। पहले 25 मेंबर्स थे, कब, 1956 तक, राइट। इट हैड 25 मेंबर्स, 25 members, right, till 1956, and then thereafter the strength of the committee, increased to 30. All are from the Lok Sabha. All members are from the Lok Sabha. जो भी मेंबर्स हैं 30, वो लोकसभा से होते हैं एस्टिमेट कमेटी में, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था, इलेक्शन कैसे होता है इनका। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कैसे इलेक्शन होता है, हाउ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी आर इलेक्टेड, PRSTV, members are elected by the parliament itself ना, यहाँ पर भी members are elected by the Lok Sabha itself, लिखिए, the members are elected from the Lok Sabha itself। तो हटा दूं क्या, are you able to see? Okay, fine। members are elected from the Lok Sabha। हाँ, अच्छा नहीं लिखा अभी तक, लिखो। जॉन मथाई, राइट। आपने जॉन मथाई का नाम नहीं सुना है, आपने बॉम्बे प्लान सुना है, बॉम्बे प्लान। Yes, sir. क्या था बॉम्बे प्लान, प्रियांश? Sir, it was the plan of the industrialist regarding to the economy of the independent India. Yeah, economic planning in the post-independent India. What Indian planning or economic strategy should India adopt? Right, very good. John Mathai was one of the member of that Bombay plan. प्रियांश कहाँ थे इतने दिन तक? Sir, I was taking recorded classes. That's fine, but आप बिजी थे, एग्जाम था, was it that? No, sir, I got sick, got cold.
आर यू फाइन नाउ? Yes, sir. चलो लिख लिया आप लोगों ने. अब लिखिए इलेक्शन. Members are elected. Members are elected by the Lok Sabha from amongst its members. Members are elected by the Lok Sabha from amongst its members on the basis of PRSTV. On the basis of PRSTV. Thus, all political parties get due representation in it. Thus, all political parties get representation in it. क्या हो जाता है? बंद कर दो ना. Thus, all political parties get representation in it. ठीक है. एक चीज ये है, जैसे आपने उसमें हमने देखा कि मिनिस्टर कैन नॉट गेट इलेक्टेड. इसमें भी है. देखिए, अ मिनिस्टर कैन नॉट गेट इलेक्टेड. A minister cannot get elected as a member. As a member. ठीक है. टेन्योर क्या है? टेन्योर क्या है? 1 year. Tenure is 1 year. उसके बाद चेयरपर्सन लिखिए, नॉमिनेटेड बाय, appointed by the speaker from amongst its elected members. Appointed by the speaker क्या लिखा? Appointed by the speaker from among its elected members. ठीक है. ये हो गया. यही सब तो लिखवाया था उसमें भी, पब्लिक अकाउंट कमेटी में ना. ओरिजिन कब था, इलेक्शन कैसे होता, कंपोजिशन, इलेक्शन, टेन्योर, चेयरपर्सन, उसके बाद फंक्शंस. लिखिए फंक्शंस. फंक्शंस ऑफ द एस्टिमेट कमेटी. देखिए, it examines the estimates included in the budget. It examines the estimates included in the budget. Included in the budget and suggest economies in public expenditure. Next, you write, it examines the status of the economy, its improvement and efficiency. So what if happens if budget is not passed by the Rajya Sabha? Rajya Sabha has no power to pass the budget. कल मैंने बताया था, कल ही बजट बताया था ना, कि जो भी बजट पे डिमांड फॉर ग्रांट से जो भी पावर है ना, वो लोकसभा के पास है. मनी बिल के में भी लोकसभा के पास है. It examines the status of economy, its improvement. It examines the status of economy, its improvement and efficiency.
it suggests, next point, it suggests alternative policies. It suggests alternative policies. It suggests alternative policies in order to bring efficiency, in order to bring efficiency in financial administration. Okay. Next, it suggests the form of estimates. It suggests the form of estimates. It suggests the form of estimates to be presented in the parliament. Right, so these are the works of estimate committee, right? Okay, but इसके कुछ limitations है. Okay, however, the estimate committee has following limitations. However, the estimates committee has following limitations. अब limitations वही है जो public account committee के पास था. देखिए, it does postmortem report. It does postmortem report. Next, it lacks expertise. It lacks expertise and even assistance of the CAG, even the assistance of CAG, which public account committee has, which public account committee has. Okay. Next, its recommendations are not binding. Its recommendations are not binding on the government. Its recommendations are not binding on the government. Next, it cannot questions on the policy of the government. It cannot questions the policy of the government. It is not a constitutional body, or it lacks constitutional recognition. एक चीज मुझे अभी याद आया, इसका जो चेयरपर्सन होता है अपोजिशन से होता है या रूलिंग पार्टी से होता है? नहीं, अपोजिशन से नहीं होगा, ये मुझे अभी याद आया. हाँ, इसका मतलब हमेशा जो चेयरपर्सन होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा. जहां चेयरपर्सन लिखवा है ना, who appoints chairperson? The speaker appoints chairperson, right? The chairperson belongs to the ruling party. The chairperson belongs to the ruling party. ये just add कर दीजिए वहां पर. Now, right way forward. As same as in the PSC. जिस हमने पीएससी में किया है वही रिकमेंडेशन दे देंगे कि ये सब काम होना चाहिए. राइट, स्ट्रेंथ बढ़ा दो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दीजिए इसको,
गुड मॉर्निंग, आइए। तो जो हाँ again do this parliamentary committee work throughout the year or through the parliamentary session? थ्रू आउट द ईयर दे बेसिकली वो काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सेशन है तो काम करेंगे, उनका काम चलता रहता है, ठीक है। अब जब इनके सामने रिपोर्ट आएगा तभी काम करेंगे, है ना। बट ये कमिटी पूरी साल रहती है, बनी रहती है। फाइन। नेक्स्ट कौन सी कमिटी हमारा? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। और ये कमेटी बनी है 1964 में। ओरिजिन लिखिए। देखिए, द कमिटी was set up in 1964. The committee was set up in 1964 on the recommendation of Krishna Menon Committee. Kalika. The committee was set up in 1964 on the recommendation of Krishna Menon Committee. और ये हो गया। कंपोजिशन लिखिए। Composition. Okay, earlier it had 15 members. Earlier it had 15 members. 15 members. Semicolon. 10 members from the Lok Sabha and 5 from the Rajya Sabha. 10 members from the Lok Sabha and 5 members from the Rajya Sabha. In 1974, membership was raised to 22. In 1974, membership raised to 22. 15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. कंपोजिशन हो गया। अब आ जाओ इलेक्शन। देखिए, एज सेम एज इन द पीएसयू। पीएससी का इलेक्शन कैसे होता है? Members are elected by the from the Lok Sabha, by the PRSTB. And क्या? हाँ, chairperson nominated by the speaker. Chairperson जो है ना, chairperson लिखे, appointed by the speaker. Appointed by the speaker, बहुत सिमिलैरिटी है तीनों में। Chairperson appointed by the speaker from amongst its member, from amongst its elected member, from amongst its elected members. अब चेयरपर्सन क्या है? ये नहीं कि लोक पार्टी का होगा या अपोजिशन का होगा, लोकसभा से होना चाहिए। लेकिन द चेयरपर्सन मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा। द चेयरपर्सन मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा। अच्छा, जो मिनिस्टर है कैन नॉट बी मेंबर हर में। A minister cannot be member of the all in this parliamentary committee, ठीक है। अब ये हो गया, चेयरपर्सन हो गया, ओरिजिन इलेक्शन। अब क्या है? फंक्शन ना। देखिए, फंक्शंस ऑफ द एस्टिमेट कमिटी। 10 ईयर, 1 ईयर,
10 year, 1 year, 10 year, 1 year. अब ये क्या काम करते हैं, लिखिए फंक्शंस ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. इट एग्जामिन्स annual report and account of public sector undertaking. It examines the annual reports and accounts of public sector undertaking like ONGC, सेल, गेल, जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, उसका एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट को ये एग्जामिन करता है. Second, you write, it examines the annual reports of the CAG on public undertaking. It examines annual report of CAG on public undertaking. Next, it examines whether a public undertaking, it examines whether a public undertaking, it examines whether a public undertaking is managed in accordance with sound business management. Sound business management principles. We'll discuss CAG. इलेक्शन कमीशन और कैग, वो दो खत्म करके फिर मैं ये पॉलिटी खत्म करूंगा जुडिशरी के बाद. विल टॉक अबाउट सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें इलेक्शन और कैग. कैग इज अकाउंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली, राइट? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट, appointed by the president, and it audits the Indian government all accounts. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स है वो वही करता है. भाई मान लो एक कंपनी है, कंपनी का जो अकाउंट है कौन करता है? सीए करता है. ये सीए है सरकार का. जो कैग है बेसिकली इट इज अ सीए. क्या क्या? इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस, लाइक इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन. अब मैंने एक स्कॉलर है जिनका नाम है राजीव भाटिया, एंड ही आर्ग्यू दैट कि लुक, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में हमने 3 ब्रांच माना है. कौन कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तीसरा और चौथा ब्रांच होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी, लाइक कैग, इलेक्शन कमीशन. दे आर नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट. दे शुड बी ऑटोनोमस and they should exercise their power as given by the constitution, right? तो वो autonomous body होता है. You get the idea? ये autonomous body होता है, right? उनका explanation है कि ये जो है ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है. ये क्या है? फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है बेसिकली, right? They are autonomous, like election commission. देखिए limitations देखिए as same as the PSC. रिपीट कर देना उसी को. As same as Sanskriti, are you clear about chairperson? Chairperson can be either from the opposition or the ruling party, right? But आपको पता है कि जब ये मेंशन नहीं है तो जो पार्टी है स्पीकर किसको नॉमिनेट करेगा? रूलिंग पार्टी को करेगा, राइट? ये कन्वेंशन डेवलप करना पड़ता है, राइट? बहुत चीजें ना कल्चर डेवलप करनी पड़ती है, तब जाकर के वो उस पॉलिटिकल कल्चर बनता है. ठीक है, हाँ लिखिए लिमिटेशंस as same as way forward
एज सेम एज द पीएससी, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। अब आ जाओ डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये पहली बार 1993 में आया है। और रूल्स जो कमेटी है ना हमारे पास, एक रूल्स कमेटी होती है। रूल्स कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई हर डिपार्टमेंट का एक कमेटी होनी चाहिए, and that committee will examine the bills, will examine the DGs, will examine, it will help the smooth functioning of the parliament. So आप देखेंगे कि पहली बार कब आया है, 1993 में, and that time 17 department related standing committee was set up. Now in 2004 7 more department related standing committee was set up. Now we have how many? 24. लिखिए तो origin, देखिए 17 DRSC were set up. In 1993, according to, as recommended by the rules committee, of the Lok Sabha, हो गया। देखिए 7 more DRSC were set up in 2004। तो हमारे पास 24 DRSC है, ठीक है। अब लिखिए कंपोजिशन ना, कंपोजिशन कि भाई स्ट्रेंथ क्या है इसका। देखिए 31 members, 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha। क्या each DRC, I'm talking about one DRSC। In each DRSC there are 31 members, 20 from the Lok Sabha, 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha। लिखिए in each estimate committee there are 31 members, 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha। अब क्या है कि 31 मेंबर है हमारे पास, राइट, 21 फ्रॉम द लोक सभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। यहां पर इलेक्शन नहीं होता है, ये 21 मेंबर को लोकसभा के जो स्पीकर है वो नॉमिनेट कर देते हैं और 10 को राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है वो उसको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो अब लिखिए इलेक्शन। देखिए द speaker nominates 21 members from the Lok Sabha, 21 members from the Lok Sabha for each DRSC, and the chairman of the Rajya Sabha nominates 10 members. The chairman of the Rajya Sabha nominates 10 members.
फॉर ईच DRSC। अब क्या है कि क्या मिनिस्टर इसका मेंबर बन सकता है, तो आंसर है नो। देखिए, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द DRSC, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ DRSC। ठीक है, अच्छा ऑफिस कितना होता है, लिखिए 10 ईयर 1 ईयर, 10 ईयर 1 ईयर। अब हमारे पास 24 है ना, इसमें से 16 वर्क अंडर द लोकसभा एंड 8 वर्क्स अंडर द राज्यसभा। देखिए, आउट ऑफ 24 DRSC, out of 24 DRSC, 16 work under the Lok Sabha and 8 work under the Rajya Sabha। ठीक है, अब यहां पर चेयरपर्सन की बात होगी कि भाई चेयरपर्सन कौन होगा। अगेन नॉमिनेटेड, जो लोकसभा में काम करेगा वो लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट करेंगे, जो राज्यसभा में काम करेगा वो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है वो नॉमिनेट करेंगे। देखिए, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, the speaker nominates, the speaker nominates for the Lok Sabha, for the DRSC of the Lok Sabha. The speaker nominates for the DRSC of the Lok Sabha, and the chairman nominates for the DRSC of the Rajya Sabha। अब इसका काम क्या है, वर्क एंड फंक्शंस, बहुत काम करते हैं ये लोग, राइट। नाउ इफ यू लुक एट वर्क्स एंड फंक्शंस, पार्लियामेंट के बहुत सारे काम ये लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू, कोई बिल आता है तो ये लोग बिल को एग्जामिन करते हैं, राइट। राइट, मैंने आपको बताया कि बिल कैसे लॉ बनता है। तो फर्स्ट रीडिंग के बाद क्या होता है, बिल चला जाता है इनके पास, DRSC के पास, ठीक है, जाता है। पहले 73% बिल चला जाता था, अब कम हो गया है, अब 24-23% जाता है, राइट। यानी कि अब बिल उसके पास नहीं जा रहा है, राइट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। यू रिमेंबर डिक्लाइन ऑफ द थीम, मैंने बताया था कि एक थीम है डिक्लाइन ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट आर द बेसिकली सम सिम्पटम्स दैट शोज द डिक्लाइन ऑफ द पार्लियामेंट, right? So when bill, there is a decreasing number of bill goes to the DRSC, it shows decline of the parliament। ठीक है, पहला लिखिए तो, it examines bills pertaining to the concerned ministry, pertaining to the concerned ministries। It examines bills pertaining to the concerned ministries or department। Next, it examines demand for grants। it examines, अभी जो इसे DRSC काम पे लगा होगा, राइट, अभी DRSC काम पे लगे होंगे और क्या करेंगे वो, मतलब अपने जो जिस डिपार्टमेंट का उसको दिया गया है, स्पेसिफिकली अब देखेंगे कि फाइनेंस का अलग है DRSC, डिफेंस का अलग है, वो अपना काम करते हैं,
It examines demand for grants for the concerned ministry. It examines demand for grants for the concerned ministry or departments. It examines, क्या लिखा, लिख दिया ना, demand for grants for its concerned ministry or departments. Next, it considers annual report of ministry. It considers annual report of ministry or department. It considers annual report of ministry or departments. Okay, it also considers long-term policy document, long-term policy documents presented to the parliament. Presented to the parliament. Right? Okay. The the department related standing committee, the department related standing committee directly controls the parliamentary procedures. Parliamentary procedures. And hence it ensures accountability, and hence it ensures accountability, transparency, and responsiveness of the government. But the idea, तो ये सब काम डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी करती है. ठीक है. अब ये हो गया हमारा फाइनेंशियल कमेटी खत्म, उसके बाद डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी खत्म, एक ही जगह. बट ईच कमेटी हैज सिमिलर फंक्शंस, राइट? ऐसा नहीं कि department related standing committee of the finance has different role than the department related standing committee of the defense or urban affairs और पंचायत, सबका एक ही काम है, राइट? और लॉ. ठीक है. नाउ लुक एट कमिटी टू एनक्वायर. यहां पर 3 कमिटी बताई थी मैंने, राइट? कमिटी टू एनक्वायर. यहां पर 3 कमिटी बताई थी. कमिटी ऑन पिटिशन, या कमिटी ऑन प्रिविलेज एंड एथिक्स कमिटी. लिखिए तो जरा कमिटी ऑन पिटिशन के बारे में. कमिटी ऑन पिटिशन, okay, it has 10 members. It has 10 members from the Rajya Sabha and 15 members from the Lok Sabha. 10 members from the Rajya Sabha and 15 members from the Lok Sabha. It examines petition on bills. It examines petition on bills or on matters of general public importance. Or on matters of general public importance. ये तो हो गई किताबी भाषा, राइट? प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि जब बिल
फर्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग के बाद गजट नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाता है। बिल वो पब्लिक डोमेन में होता है और उसमें लिखा रहता है कि आप पब्लिक से जो अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं उस पर कमेंट करें। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, तो बहुत लोग पिटिशन डालते हैं कि भाई इस बिल में ये होना चाहिए, इस बिल में ये होना चाहिए, इस बिल में ये होना चाहिए। अब वही पिटिशन को इंक्वायर करती है कमिटी ऑन पिटिशन। समझ में आया? राइट? कोई भी बिल बनती है ना, आपको बिल मेकिंग प्रोसेस पता है ना? राइट? फर्स्ट रीडिंग के बाद बिल क्या हो जाता है? गजट नोटिफिकेशन निकल जाता है। राइट? वो पब्लिक डोमेन में बिल होता है। ठीक है? डिबेट का मैटर होता है कोई भी बिल। राइट? अगर स्टूडेंट से रिलेटेड है तो स्टूडेंट उसको डिबेट करते हैं, अगर फार्मर से रिलेटेड है तो फार्मर्स उसको डिबेट करते हैं। राइट? जैसे कि शांति बिल आया था या वीवी राम जी बिल आया था। राइट? तो वो जब नोट निकल जाता है फिर लोग उस पर पेटिशन डालते, गवर्नमेंट को बोलते कि अच्छा ये लाइए, ये करिए। तो ये कमिटी का काम वही है। व्हाट आइडिया? नाउ राइट, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, ये सेकंड कमिटी है, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। इसमें भी 15 मेंबर होते हैं, लेकिन इट हैज 15 मेंबर्स। इट हैज 15 मेंबर्स। इट हैज 25 मेंबर्स। It has 25 members, 15 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. Similar, as similar petition जैसे होता है। It has 15 कितना? 25, 15 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. Correct? ठीक है। अच्छा, सी काम क्या करता है ये? अगर कोई मेंबर प्रिविलेजेस को वायलेट करता है, राइट, बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यू हैव सेवरल प्रिविलेजेस। ठीक है? अगर उसको कोई वायलेट करता है तब ये कमिटी उसको इंक्वायर करती है। राइट? उसको पनिश भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल महुआ मोइत्री का नाम सुना है आपने? उसने कुछ पासवर्ड शेयर किया था। राइट? तो फिर क्या हुआ? कमिटी बैठी उस पर। ठीक है? और फिर उसने जो भी उनको सजा सुनाना होता है वो सुनाती है। ये सेमी जुडिशियल नेचर भी होता है। लिखिए, दिस कमिटी हैज सेमी जुडिशियल नेचर। दिस कमिटी हैज सेमी जुडिशियल नेचर। This committee has semi-judicial nature. It examines the case of it examines the case of the case of breach the case of breach of parliamentary privileges. It examines the case of breach of parliamentary privileges. अच्छा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता क्या है? लिखिए, व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक लाइन में। व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? Okay. Being member of the parliament, being member of the parliament, each MP enjoy certain special rights. Being member of the parliament, each MP enjoys certain special rights and immunities. And immunities. इसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है? उनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। राइट? वो इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते। एक आ गया है, थर्ड है एथिक्स कमिटी। राइट? एथिक्स कमिटी ये बहुत रिसेंट कमिटी है। पहले एडहॉक कमिटी हुआ करता था, अब हो गया ये परमानेंट कमिटी। देखिए, दिस कमिटी वाज सेट अप इन द राज्य सभा। दिस कमिटी वाज सेट अप इन द राज्य सभा in 1997. This committee was set up in the Rajya Sabha in 1997 and in the Lok Sabha
in 2000. Earlier it was an ad hoc committee. Earlier it was an ad hoc committee. Earlier it was an ad hoc committee, but later on it had become a part of permanent committee. But later on it had become part of permanent committee. The purpose of the committee, is to maintain ethical conduct and decorum of the house. जैसे कल मैंने आपको बताया कि मान लो कि कोई एमपी है और उसको बाहर जाना है, ठीक है, फिर उसने टिकट जब राइट तो उनका होता है कि भाई कितने लोग जाएंगे आप बताइए, तो वो बोलता है कि ठीक है मेरी फैमिली में मैं भी जाऊंगा, मेरी वाइफ भी जाएगी, राइट, बट जाते वक्त वो किसी और के साथ जाते हैं. दिस इज अनएथिकल, राइट. इसी को इंक्वायरी करती है, राइट. अभी कल या परसों आया था, एक मिनिस्टर ने बोला कि मैं जाऊंगा, मेरी वाइफ और बच्चे भी जाएंगे, और किसी के साथ दूसरे के साथ गया, राइट. एनीवे, सो उस टाइप का ये इंक्वायरी करती है. नाउ एक है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इंपॉर्टेंट कमिटी. कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. अच्छा, एथिक्स कमिटी के मेंबर कितने होंगे? मेंबर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 से 10, फिक्स नहीं है एथिक्स कमिटी का. एज आई टोल्ड यू दैट एथिक्स कमिटी इज अ वेरी रिसेंट कमिटी. सो जो मेंबर्स हैं 7 to 10 हो सकते हैं, इसलिए मैंने मेंबर नहीं लिखवाया, राइट. कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी. देखिए, दिस कमिटी एग्जामिन्स दैट कम्स अंडर, लिखवाया था ना बहुत सारी कमिटी. कमिटी टू स्क्रूटनी एंड कंट्रोल, इसमें बहुत सारी कमिटी है. कमिटी ऑन SC/ST, कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, दैट आई विल स्किप, यू नीड टू गो थ्रू. जैसे कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट क्या करेगी? वुमेन एम्पावरमेंट इश्यूज को देखेगी. कमिटी ऑन SC/ST, वो कमिटी ऑन SC/ST को देखेगी, राइट. जो इंपॉर्टेंट है क्लिम्स के परस्पेक्टिव से, दैट इज कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है. लिखिए, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. देखिए, दिस कमिटी एग्जामिन्स and report to the house. This committee examines and report to the house whether the power to make regulation, whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws. This committee examines and reports to the House whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws delegated by the Parliament or the Constitution, delegated by the Parliament or by the Constitution, is properly exercised by the executive or not. Is properly exercised by the executive or not. ठीक है, समझ में आया क्या? आपको मैंने लॉ का डिफिनेशन आर्टिकल 13 बताया हुआ है.
और इसमें आर्टिकल 13 क्या डिफाइन करता है, लॉ क्या है। तो लॉ केवल वही नहीं है जो पार्लियामेंट पास करती है, लॉ हैज अ ब्रॉड डेफिनेशन, राइट। अब क्या है कि ये जो लॉ बनाने का जो डेलीगेशन है, मतलब एग्जीक्यूटिव भी लॉ बनाती है, जैसे रेगुलेशन अभी निकाला है वंदे मातरम के ऊपर, दैट इज अ लॉ, राइट। अब ये प्रॉपरली एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये काम कौन करती है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। गॉट आइडिया। पार्लियामेंट हो गया खत्म, राइट। एक बड़ा चैप्टर है पार्लियामेंट का। थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा को, राइट। लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। अब देखोगे कि क्या है कि लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा, राइट। ये कहां कहां पर है, मैंने पढ़ा दिया है, जस्ट यू कैन टेल मी। इट्स लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा इन सर्टेन point Lok Sabha has equal power as the Rajya Sabha, and in certain point Lok Sabha has less power than Rajya Sabha. Rajya Sabha has more power. ये कंपैरेटिव स्टडी है लोकसभा राज्यसभा का, ठीक है। लोकसभा कब पावरफुल है, मनी बिल, यस, मनी बिल के ऊपर, यस, आर्टिकल 110। कब वोटिंग राइट्स कब, हाँ, दैट इज मनी बिल, राइट। मनी बिल के ऊपर हो गया। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग, राइट। ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, लोकसभा ऑलवेज ऑलवेज डोमिनेट्स। आपको बताया कि भाई ज्वाइंट सिटिंग में होता है क्या, लोकसभा का स्ट्रेंथ ज्यादा है, राज्यसभा का कम है। अगर दोनों को जोड़ भी लो, राइट, तो अगर लोकसभा चाहेगा तो बिल पास हो जाएगा। उसके बाद या डीजी को लेकर के लोकसभा हैज मोर, राइट, इट इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। उसके बाद सरकार को हटाना हो तो राज्यसभा अपने आप हटा सकती क्या, नहीं, इट इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, सब बताया हुआ है। और एक मोशन है जो, दो मोशन है, कॉन्फिडेंस मोशन भी यही होता है। कॉन्फिडेंस मोशन इज वेरी रिसेंट वन बिकॉज ऑफ द हंग पार्लियामेंट, पहले ऐसा था नहीं, राइट। उसके बाद और एक मोशन है, क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशन। या तो आप देखिए कि भाई किस किस जगह पर जो लोकसभा है उसके पास ज्यादा पावर है, ठीक है। राइट, उसके बाद और अभी पढ़ा हमने फाइनेंशियल कमिटी में, एक पढ़ा है कमिटी, क्या नाम था उसका, एस्टिमेट कमिटी। एस्टिमेट कमिटी में कहां पर होता है नंबर, लोकसभा से लोग, राइट। या फ्रॉम द लोकसभा, ठीक है। अच्छा, लोकसभा राज्यसभा बराबर कब है, एक और बिल मनी बिल हो गया ना, और या और एक बिल बताया था मैंने कि जो बिल होता है फाइनेंशियल बिल 1 बताया था, वो भी वहीं पर पास होगा, राइट। फाइनेंशियल बिल 1 वो भी यहीं पर आएगा, मोस्टली वी कवर्ड, ठीक है। नाउ लुक एट वेयर लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल में इक्वल पावर है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें भी बराबर पावर है। थर्ड, अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस,
ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना, इनके पास सेम पावर है, राइट। उसके बाद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, पीएम भी ऑर्डिनरी बिल ही है, राइट, ऑर्डिनरी बिल ही है पीएमबी भी। देन election of the president, vice president and their removal, वाइस प्रेसिडेंट का मत लिखना, रिमूवल है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, फिर लिख देना रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट और जजेज, हाँ, लोकसभा, राज्यसभा हैज सम स्पेशल पावर, राइट। व्हाट इज दैट? नहीं, परमानेंट हाउस तो ठीक है, मतलब हाउस की बात कर रहे हैं, राइट। परमानेंट आर्टिकल 249, यू रिमेंबर आर्टिकल 249 makes laws on state. yeah, the Rajya Sabha has a special power to pass a resolution in order to empower the house to make law on any items enumerated in the state list. पहले ये निकालेगा, रिजोल्यूशन देगा, तभी पार्लियामेंट लॉ बना पाएगी स्टेट लिस्ट के ऊपर, अदरवाइज नहीं बना पाएगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं बना पाएगी, ठीक है। फिर है आर्टिकल 312, ये क्या है? कोई भी ऑल इंडिया जो सर्विसेज होगा ना, वो पहले इनिशिएटिव राज्यसभा को लेना है, ठीक है। जैसे अभी बात चल रही है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट करने की, राइट। तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा राज्यसभा को, फिर सरकार बना पाएगी उसको। अच्छा, उसके अलावा रिमूवल ऑफ द vice president. Vice president is not removed as a vice president. Vice president is removed as a chairperson of the Rajya Sabha, and it must be initiated in the Rajya Sabha, right? So removal of the, इसको लिख लिया है, approval of the ordinances. Removal of chairman, और लिख सकते हैं VP, vice president. The Rajya Sabha has a special power. It must be introduced in the Rajya Sabha. तो मोटा मोटी हो गया है। If you find any issue from the parliament, we can discuss later also, right? But मैंने अपने तरफ से खत्म कर दिया है। Fine. Sir, बोलो। sir, in this Article 249, the resolution to make laws on state subject, the power lies with the Rajya Sabha. But sir, when the resolution is passed, after that, will it be the exclusive power of Rajya Sabha to make laws on the state list, or नो the नो नो, Lok Sabha also has? पार्लियामेंट के पास राज्यसभा पहले रिजोल्यूशन पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी से, उसके बाद ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस हो पाएगा। The parliament will be empowered to make law on any items enumerated in the state list after the Rajya Sabha will pass a resolution with a special majority. प्रियांश, तो राज्यसभा ऑलरेडी अगर रिजोल्यूशन पास कर दे, उसके बाद क्या करेगी, राइट? वो बिल, एक बिल होगा, चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो या लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो। आपको बिल मैंने बताया कि बिल कहीं पर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राइट? चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है और फिर वो पास होगा, ठीक है। एक हाउस से पास होगा, दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस से पास होके फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, राइट, वो लॉ बन जाएगी स्टेट लिस्ट के ऊपर। प्रियांश, Yes, sir. ओके, तो ये हो गया खत्म। लेट मी गिव यू 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल मूव टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है।
I'll be back by 11, right? Hello, am I audible? Tamanna, Sharita, Shelly, Sanskriti, Priyans. Hello, hello, hello. Am I audible? I hope so. हाँ, अब हमें पढ़ना है executive. Basically, we'll deal with union executive here. Union executive. And if you look at union executive, it is explained in the part 5 of the constitution, and from article 52 to article 78 यहाँ तक सारी बातें हमें मिल जाएगी जो भी प्रेसिडेंट से यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 और फिर 79 से वहां शुरू हो जाता है लेजिस्लेचर, राइट? तो पहले एग्जीक्यूटिव डिटेल्स में है, उसके बाद लेजिस्लेचर के बारे में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. If you look at the union executive, it consists the president, vice president, council of minister headed by prime minister, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल. ये एग्जीक्यूटिव है. अगर आप देखोगे कि एग्जीक्यूटिव अगर हम डिवाइड करें तो दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसकी हम लोग बात करेंगे, एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, राइट? आईएएस, आईपीएस, जो भी और भी परमानेंट जो भी अपॉइंटेड है लोग, दैट इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. Political executive basically are elected for the particular period of time and they keep changing, right? Permanent executive are basically permanent, right? Now in political executive you can see that composition of the political executive is this: the president, vice president, council of minister, right, headed by the prime minister, and attorney general. ajiye attorney general. अब ये है हमारा पोजीशन. अब इसमें हम वन बाय वन सबको डील करेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ठीक है? अब आ जाओ प्रेसिडेंट को, द प्रेसिडेंट, राइट? नाउ इफ यू लुक एट द प्रेसिडेंट, is the head of the Indian state basically, and all of the executive work is done on the name of president, right? President symbolizes national unity, integrity, ठीक है? And the president is a first citizen of India. All name is done on the name of the president, ठीक है? President is the chief of the armed forces, ठीक है? But इतना पावर होने के बावजूद आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट इज अ मेयर सेरेमोनियल फिगर हेड. President is a mayor ceremonial figurehead. Here I'll talk about 3 articles which actually defines the president position, right? Article 53, ठीक है, Article 74 and Article 75.
यहाँ बहुत अच्छे से समझिए, उसको हम यही मतलब बेसिकली 2 कॉपी है वहां पर स्टेट में। मैंने क्या कहा कि आर्टिकल 52 से शुरू होता है, ठीक है, खूब ध्यान से आर्टिकल पढ़िएगा, आर्टिकल से 52 टू 78, जितने दिन भी एग्जीक्यूटिव वी विल डिस्कस, राइट, approximately 2 classes or 3 classes, not more than that. अब इसमें आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। आर्टिकल 53 कहता है कि द executive power of the union government shall be vested in the president, who shall exercise power directly or indirectly with the help of subordinate officer, right, in accordance with the constitution. बस सुनना है, लिखना कुछ नहीं है। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे, जो पावर डायरेक्टली एक्सरसाइज करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, राइट, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, राइट, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 74 है। अच्छा, सबऑर्डिनेट ऑफिसर कौन है इनका? Who is the subordinate officer of the president? गवर्नर। अरे ये जितने भी है ना सबऑर्डिनेट ऑफिसर है। गवर्नर तो स्टेट छोड़ो, स्टेट का पार्ट है, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट गवर्नर सबऑर्डिनेट है, बट यहां पर जो सबऑर्डिनेट का मतलब है वो है वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके हेल्प से वो काम करेंगे, अटॉर्नी जनरल इसके हेल्प से वो काम करेंगे, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, राइट। आर्टिकल 74 क्या कहते हैं? आर्टिकल 74 कहता है कि there shall be a council of minister, right, headed by the prime minister, to aid and advice given given to the president, who shall act according to such advice, right. I'll repeat, there shall be a council of minister headed by the prime minister, right, to aid and advise to the president, who shall act according to such advice, ठीक है। अब आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 बहुत लंबा चौड़ा है, राइट। ये पहली बात कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर हु एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया? द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। दूसरी बात ये कहता है कि the executive shall be collectively responsible to the legislature. In another word, the council of ministers shall be collectively responsible to the lower house, ठीक है। तीसरी बात कहता है कि मिनिस्टर shall hold office during the pleasure of the president, including prime minister। मिनिस्टर क्या कह रहा हूं तो प्राइम मिनिस्टर भी है, वो मिनिस्टर ही है, बट प्राइम है, इंपॉर्टेंट है, right. So minister shall hold office during the pleasure of the president. फिर चौथी बात कहता है कि the entire strength of the council of ministers should not exceed the 15% of the total strength of the lower house, right. ये बाद में ऐड किया गया था, बेसिकली 91st Constitutional Amendment Act 2003 added inserted this clause। हुआ क्या, क्यों हुआ ये? क्योंकि आप देखेंगे कि आफ्टर 1989 India seen coalition government consisting of several regional parties, right, and each regional parties has claim over the ministerial birth कि भाई हमें भी एक मंत्री दे दो, हमारे पार्टी को भी 2 मंत्री बना दो, 3 मंत्री बना दो। In order to accommodate all the parties, right, the strength of the council of ministers got basically expanded, right, and that was criticized by civil society groups, scholars, lawyers, right, and consequently parliament amended the constitution, right, और बोला कि भाई ऐसा करना है कि आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या नहीं होगा, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि लोकसभा का स्ट्रेंथ है 543, उसका 15% कितना होगा? जरा
अप्रोक्सीमेटली 79-80 होगा, जरा निकालिए तो, उससे ज्यादा नहीं होगा। 79 होगा, ठीक है, हाँ 79-80 के अप्रोक्स आता है, ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं निकाल सकते ना, 79-80 के अराउंड होगा। उस डिबेट में जाना नहीं, मैथमेटिकल डिबेट में जाना नहीं है, राइट, जो मेरा जोन नेम उसमें मैं तो कूदना ही नहीं चाहता। एनीवे, समझ में आया। एक ये भी बात है इसमें कि एनी पर्सन कैन बी द मिनिस्टर, राइट, फॉर द कंसेक्यूटिव 6 months within which that member has to acquire membership of the either of the house, right, otherwise that member or that minister ceases to be a minister। समझ में आया, नहीं समझ में आया? कोई भी मिनिस्टर बन सकता है लगातार 6 महीने तक, राइट, लेकिन उस लगातार 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, आइदर लोकसभा का या राज्यसभा का, राइट, नहीं तो वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे। डू यू हैव एनी एग्जांपल सम पर्सन कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा? कौन था क्लास में, मैंने बताया चौधरी था चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह। नहीं, चौधरी चरण सिंह वाज अ वेरी स्ट्रांग लीडर। क्या बात करते हो, चरण सिंह वाज अ वेरी स्ट्रांग जाट लीडर्स, established party log first Bharatiya Kranti Dal, but that converted to the Bharatiya Lok Dal later on. H.D. Devgowda. When H.D. Devgowda became a prime minister, right, he was neither of the member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha. अच्छा, इंग्लैंड में क्या है? Who can become the prime minister? In Britain, you know, council of minister, a person who is a member of the lower house can become the prime minister, right? वो तो leader of the house होता ही है, but हाँ हाँ, वो तो दूसरा है, शैडो कैबिनेट की बात कर रहे हैं। हाँ, जो लोअर हाउस का मेंबर होगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। कितने दिन तक? 6 month तक, ठीक है, 6 month तक। अभी जो जयशंकर है, when he became the basically foreign minister, he was not member either of the house, later on he became the prime minister, ठीक है। तो ये इसी में है, राइट। और कुछ है? अप्रोक्सीमेटली मैं सारा कह दिया, दैट इज आर्टिकल 75। अब एक सवाल है कि whether the president has the real executive or he's a really, you know, he has a ceremonial figurehead, right? Then if you look at, there is a debate in the Constituent Assembly. In the Constituent Assembly, right, Ambedkar said that the president is a ceremonial figurehead, right? The position of the president is like as similar as the crown in the British Parliament, right? Like, you know, cherry on the cake, a ceremonial, right? ठीक है। But if you look at the first president who emphasized, who wrote letter, several letters to the prime minister, Dr. Rajendra Prasad wrote several letters to the prime minister Nehru that look, you just read article 53, क्या कहता है, right? The union, the president is the, you know, real executive, right? The entire executive power is vested with the president, who shall exercise power directly or with the help of the subordinate. You are a subordinate, right? The real power is vested with me. Basically, he wrote several letters. Now, in exchange, Nehru wrote letter to the president, and he held, look, we have established parliamentary democracy where the head of the state is very much ceremonial. Wherever in the world you go, if it is a parliamentary democracy, then the head of the state is very much ceremonial. जहां पर भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, चाहे वो जर्मनी लो, जापान लो, इंग्लैंड लो, कनाडा लो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लो, कहीं पर भी, द रियल पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द, उन्होंने वकील हायर कर लिया अपना पर्सनल, कौन? प्रेसिडेंट ने, और बोला कि भाई तुम पता करो कि बात क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? देयर वाज अ
Supreme Court judgment in 1955. That is called Ram Jawaya Cooper versus Union of India. Now, Supreme Court clarified that look, we have opted parliamentary form of democracy like Britain, and where the head of the state is very much, ceremonial figurehead, a nominal figurehead. Okay. Later on, Supreme Court in R.C. Cooper case, UN Rao case, right? Her judgment में वही कहा है. So the president is a very much ceremonial figurehead, and the real power lies with the council minister headed by the prime minister. But the president, see, every republic, there's an elected head. So republic democratic. You looked at the preamble. We are the republic democratic, right? So head of the state should be elected first. That is a republic. Democratic means there should be vast democracy. Now, if you look at the form of government that evolved around the world, there are many types, but it can be categorized into three. One is called presidential form of, another is called parliamentary form, and third is called mixed form. Okay? In mixed form, the position of the president and prime minister depends on the constitution. Look at, like, for example, France, right? France has mixed. ठीक है. अगर आप देखोगे कि पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में रियल जो पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और द प्रेसिडेंट जो क्या होता है, बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट? नेशनल सिंबल, यूनिटी, इंटीग्रिटी, राइट? वो उसके पास असाइनमेंट होता है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और डिफेंड द राइट्स ऑफ द पीपल इन ब्रिटेन. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर इज बेसिकली पार्ट ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट who can give order for anything. Got the idea? So there is a difference between a state and the government, right? The president represents the state and the prime minister represents the government. So head of the state is someone and head of the government is someone else. हाँ, यस, ये भी डिबेट हुआ था कि भाई क्या हम प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्टेड करेंगे, अभी इलेक्शन पे आएंगे, तो ये लगा कि भाई सिंस वी आर गोइंग टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, and in parliamentary democracy the president is a mere nominal head, the president has no substantive power. Now what is benefit of direct election, right? So there was the indirect election process has been introduced in the constitution for the election of the president. ठीक है, ठीक है. सारा काम इन्हीं के नाम से होता है, सारा काम इसके प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं होता है. Every work in Indian Union is done on the name of the president. Every work. What the idea? अब इतनी कहानी के बाद थोड़ा सा कहानी को लिखना भी है. Yeah, write it. Which I do believe writing is very important part, right? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर सब्जेक्ट में आपके पास नोट्स होना चाहिए. मैंने जो पढ़ा है वो रीढ़ की हड्डी है, अब उसमें मांस जोड़ना, फ्लेसेस को ऐड करना, दैट्स योर टास्क, राइट? ठीक है, कुछ चीजें और ऐड करना है, कुछ चीजों को और सजाना है, राइट? एंड देन यू बी प्रिपेयर योरसेल्फ. व्हाट आइडिया? ऑलराइट, लिखिए. Part 5 of the Constitution, and from Article 52 to Article 78, Part 5 of the Constitution and from Article 52 to Article 78 deals with Union Executive. Okay. The Union Executive can be categorized into two parts. The political executive and the permanent executive.
मैं आपको बता दूं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत कम आर्टिकल डिवोटेड है, आर्टिकल 312 टू आर्टिकल 315 तक, राइट। बट आगे लिखिए, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट पॉइंट, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट the president, vice president, council of ministers headed by the prime minister, and attorney general, and attorney general. And attorney general. Right now, write president, right? The president. Okay, the president is a symbol of, the president is a symbol of national unity and integrity. The president is the symbol of national unity and integrity. He is the head of the state. He is the head of the state. And all work and all executive work is done, and all executive work is done on the name of the president. All executive work is done on the name of the president. She is the head of the armed forces. She is the head of the defense forces. She is the head of the defense forces, right? Okay. The position of the president in Indian Union, the position of the president in the Indian Union, the position of the president in Indian Union is explained by three articles. By three articles, namely Article 53, namely Article 53, comma Article 74 and Article 75. ठीक है, अब तीनों आर्टिकल को हमें देखना है। देखिए आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, okay, it says that the executive power of the union government shall be vested in, it says that the executive power of the union, the executive power of the union shall be vested in the president. The executive power of the union shall be vested in the president. The executive power of the union shall be vested in the president, who shall exercise such power, who shall exercise such power either directly, who shall exercise such power either directly or indirectly
with the help of council of minister, with the help of subordinate officer, ये word है, with the help of subordinate officer, with the help of subordinate officer, in accordance with the constitution, in accordance with the constitution, in accordance with the constitution. Further, it says that, next point, further it says that the supreme command of the defense forces shall be vested in the president. The supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president. Further, the supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president. And its exercise shall be regulated by the law. And its exercise shall be regulated by the law. And its exercise shall be regulated by the law. Right, so that is the two component in Article 53. Now move Article 74. Move Article 74. It says that there shall be a council of minister. It says that there shall be a council of minister headed by the prime minister. There shall be a council of minister headed by the prime minister to aid and advise the president. To aid and advise the president, who shall act according to such advice. Who shall act according to such advice. ठीक है, one more line you write, next point within the Article 74. लिखिए, the advice tendered by the council of minister to the president, the advice given by the council of ministers, word यूज होता है tendered, इसलिए मैंने tendered, the advice tendered by the council of ministers to the president shall not be inquired in any court. यानी कि जो भी एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इट विल नॉट कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू, राइट? Sir, sir, if this advice of the minister is not considered in any court of India, as well as the advice and the orders are also not countersigned, as in Britain, cannot the president commit a coup against the executive or take all the power in his hands? How the president will coup? और even look at the Indian president, उसके पास भी थोड़ा पावर भी है, right? Look at the British crown. ऑलरेडी जो coup होना था वो पहले हो चुका है, लड़ाइयां हो चुकी है और चीजें फाइनल हो चुका है. इंग्लिश सिविल वॉर किसी को पता है? Yes, sir.
ये ऑलरेडी ये सब इंसिडेंट हो चुका है, उसको पता है कि भाई नहीं कर सकते, वो नहीं करेगा। ठीक है, Sir, I बिकॉज am लुक एट saying in लुक एट India, if I am the president and mm, any advice to me cannot be inquired in court, and if I order something to the army officers or any of the bureaucrats, I नहीं don't करेगा वो काम need. आपका, Uh, he will not work according to your advice, let me tell you, sir, right? It is why? in reality it is advice is tendered by the prime minister. आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वाज मोस्ट एक्टिव, नॉट द प्रेसिडेंट, right? And look at the constitutional system which is well established in India, right? Now in you're rightly suspicious over the system where where there's a weak institutionalization, right? हुआ क्या है पूरी दुनिया में, जहां पर आप कह रहे हैं, जहां पर डायरेक्शन आपका जा रहा है, कि हुआ क्या है कि कंट्री तो डिकोलोनाइज हुआ, डिकोलोनाइज मतलब इंडिपेंडेंट हुआ, डिकोलोनाइज होके, और वो डेमोक्रेटिक रहा, राइट? और बाद में क्या हुआ कि वहां के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कू से मिलके, और कू ने फिर उनको भी साइडलाइन कर दिया, बाद में आए, और फिर बाद में वो आकर के ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट बन गया। लुक एट पाकिस्तान हैपेंड द सेम थिंग, right? In Pakistan, in Bangladesh happened same thing, Myanmar happened similar thing in 1960s, right? So your suspicion is right, but in India it's not. Look at why it is not. There's a very much strong institutionalization had been set up in India, right? And another thing, look at, there's a deep rooted democratic value that we Indians have. Got the idea? राइट? जियो और जियो जीने दो की जो पॉलिसी है हमारी, राइट? बहुत सारे, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं वेस्ट में, बहुत सारे थ्योरी बाद में बनाए, राइट? वेस्ट क्या करता है कि वो केवल जो सिंपल फोर्ट भी करता है ना, तो पूरे विश्व को लगता है हाँ क्या आनंद है उसमें, और पूरी दुनिया गाल बजाती रह जाती है, कुछ नहीं होता है, राइट? तो ये है we have democratic value, right? And that's why Indian system cannot be cool. Indian political system cannot be cool. Let me tell you, in 1950, 60, around one army chief tried to do it. Let me tell you, but पहले सरकार को पता चल गया, right? And the government has sent him in Australia, right? The prime minister, of course, Nehru was the prime minister. उन्होंने कहा कि you are a good sportsman, you go to the good sports country. He was sent to Australia. France, what the idea? Otherwise, प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऐसा पावर नहीं है, राइट? कोई कि डेमोक्रेटिक कल्चर होता है। आप देखेंगे कि जब संविधान बना इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो डिबेट थी कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा कि नहीं चलेगा। हमने बना तो दिया, राइट? विल इट वर्क, राइट, इन द फ्यूचर? नाउ रेस्पॉन्स वाज गिवन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा कि देखो, हमने कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, if the future leader will not be good, right, it will not work. मान लो कि हमने बैड कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, the existing constitution is not good for the future India. If leader will be capable, they will reform. We have given Article 368. They can, bring amendment to the constitution and make it workable. Look at how many constitutional amendment has been done. 106, right? 108 हो गया, 106 को लेकर के चलते, look, more than 100 times amendment had been done. Fine, move ahead. क्या लिखा? आर्टिकल 75 ना, 74 हो गया, खत्म नहीं हुआ। 74 में मैंने क्या कहा कि there should be council of minister to aid the council of minister headed by the prime minister to aid and advise the president, who shall act according to such advice. The advice tendered by the council of ministers shall not be inquired into any court. ठीक है? Now write 74. 75, yes, article 75.
आर्टिकल 75। देखो आर्टिकल 74 में कोई दिक्कत तो नहीं है, 53 में भी दिक्कत नहीं है। देखो ये इसी का रेप्लिका है स्टेट के लेवल पे। जब हम बात करेंगे ना गवर्नर का, सेम है, मैं कुछ नहीं, गवर्नर के जगह पे, प्रेसिडेंट के जगह पे गवर्नर बोलूंगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जगह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलूंगा, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वहां बदल दूंगा चीफ मिनिस्टर, कुछ अंतर नहीं है। नाउ राइट आर्टिकल 75, लिखिए, इट सेज द फॉलोइंग, बहुत सारे क्लॉज है तो थोड़ा सा, इट सेज द फॉलोइंग्स, इट सेज द फॉलोइंग, फर्स्ट लिखिए, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, the prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president। लिख लिया, पहला है the prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister। अच्छा, पार्लियामेंट के ऊपर एक टेस्ट हो जाए, ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, यू रेडी? हाँ ठीक है, तो दिस वीक विल बी एबल टू अटेम्प्ट। नेक्स्ट लिखिए, देखिए, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, the total strength of the council of minister should not exceed, the total strength of the council of ministers should not exceed, should not exceed 15% of the total number of, the total strength of council of ministers should not exceed 15% of the total numbers of members of the Lok Sabha। यानी कि 543 का जो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा ना, सीओएम, जो नंबर होगा इससे लेस ही होगा, राइट, इससे ज्यादा नहीं, या बराबर हो सकता है, ठीक है, इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट यू राइट, मिनिस्टर्स, द मिनिस्टर्स shall hold office during the pleasure of the president, during the pleasure of the president, pleasure of the president, the minister shall hold office during the pleasure of the president। इसका क्या मतलब है कि जब भी प्रेसिडेंट चाहेंगे मिनिस्टर को हटा सकते, बट लेट मी टेल यू, मिनिस्टर को वो ऐसे नहीं हटाते, हटा अगेन एडवाइस लेना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर खुद भी डिसॉल्व करेंगे तो वो प्रेसिडेंट को बोलते कि अब ये डिसॉल्व होना है, तो आप फिर बोलते ठीक है डिसॉल्व कर दीजिए। See, wherever the government works around the globe, there is some secrecy, right, which is maintained everywhere, ठीक है। So it's not that all advices are not basically documented। बहुत सारे एडवाइसेस है डॉक्यूमेंट होता है, जैसे जो भी बिल बनते हैं, जो भी कुछ होता है, कुछ एडवाइसेस सीक्रेसी के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जो ऑफिस, जो हम आप देखेंगे प्रेसिडेंट भी ओथ इन ऑफिस लेता है, या प्राइम मिनिस्टर लेता है, या मिनिस्टर लेता है, वो सीक्रेसी का भी शपथ लेता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर को सारे रिपोर्ट जो है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को देते हैं, ठीक है। अब उसके हिसाब से वो एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। तो एडवाइस क्या करेंगे? वो सारे एक्शन लेंगे, ठीक है। अब बड़े बुजुर्ग हैं घर में, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं
राइट, वैसे बड़े बुजुर्ग है वो प्रेसिडेंट, ठीक है, उनका जो फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है, समझ में आया? लिखिए तो जरा क्या लिखा, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट लिखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall be collectively responsible to the house of the people. The council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people. इस लाइन को मैंने कम से कम 50 बार बोला होगा, राइट, जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से इस लाइन को पिछले तो दो साल पहले तक हर बार मतलब वर्ड बदल देते थे, मतलब यही है, हर साल एक एक क्वेश्चन। अब देखो पीवाई क्यू देख लो जरा, हर साल एक एक क्वेश्चन आया है, राइट, क्योंकि एक कोर प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट यू राइट, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू और 1 मिनट, द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू कर दो द ओथ एंड एफर्मेशन, the president shall administer the oath and affirmation of the minister, right, and they shall take oath and affirmation, as prescribed by, and they shall take oath and affirmation as prescribed by third schedule of the constitution, as prescribed by third schedule of the constitution। ठीक है, थर्ड शेड्यूल की बात हो गई। थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन सारा मेंशन है, सभी के ओथ एंड अफर्मेशन, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, मिनिस्टर or a person can be minister, a person can be minister for the 6 consecutive months, a person can be minister for the 6 consecutive months, a person can be minister for the 6 consecutive months within which he has to take membership, of either of the house. He has to take membership of either of the house. Otherwise ministership shall be ceases. Ministership shall cease. Otherwise ministership shall cease. समझ में आया? सीज मतलब खत्म हो जाएगा मिनिस्टरशिप, ठीक है, राइट। वन मोर यू राइट, okay, the salary and allowances of ministers, the salary and allowances of ministers are determined by the parliament from time to time. Salary and allowances of ministers are determined by the parliament from time to time by the law, कानून निकालना पड़ता, by the law। देखिए, and it is specified in the second schedule,
and it is specified in the second schedule. And it is specified in the second schedule. अब देखो सेकेंड शेड्यूल में क्या आ गया, सेकेंड शेड्यूल में सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ राइट मेंबर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा ऑफ ईच स्टेट, ठीक है। अच्छा, पहला शेड्यूल क्या है, स्टेट और यूनियन का नाम है, लिस्ट बना हुआ है, शेड्यूल मतलब होता है लिस्ट, राइट। तो 4 हो गया, 1 2 3 4 5। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है शेड्यूल्ड एरिया, जिसमें 10 स्टेट्स आते हैं, हिमाचल से शुरू करना और सीधे चले जाना कर्नाटका के तक, राइट, एक्सेप्ट कुछ स्टेट को आपको छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद 6 शेड्यूल क्या है, एएमटीएम, याद रखना एएमटीएम। 8 शेड्यूल क्या है, नो नो 6 शेड्यूल। 7 शेड्यूल क्या है, 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है। 8 शेड्यूल क्या है, लैंग्वेज है। 9 शेड्यूल क्या है, 9 शेड्यूल वी टॉक्ड अबाउट। नाउ व्हाट इज 9 शेड्यूल, yeah, laws. 9 schedule involves laws which protected from the judicial review, ठीक है। 10 schedule क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11 schedule क्या है, लिस्ट ऑफ द पंचायत। 12 schedule क्या है, इस तरह से आप अपना लिस्ट बना के रख लीजिएगा, राइट। अमेंडमेंट भी जितना मैंने बोला हुआ है उसका एक लिस्ट होना चाहिए, जितना अमेंडमेंट हम लोगों ने मेंशन किया है, राइट। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 75 वी हैव डन। नाउ एक सवाल दीजिए, इज पार्लियामेंट अ सेरेमोनियल फिगर हेड ऑफ द इंडियन यूनियन? एक क्वेश्चन दीजिए, इज द प्रेसिडेंट अ सेरेमोनियल फिगर हेड? मैंने पार्लियामेंट पहले बोला था, मैं खुद ही भूल जाता हूं। मैंने इज द प्रेसिडेंट अ सेरेमोनियल फिगर हेड? इज द प्रेसिडेंट अ सेरेमोनियल फिगर हेड or possess real power of the union executive of the union executive अब क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। अब थोड़ा जो बातें हम लोगों ने की है बस मैं नोट डाउन करा देता हूं। देखिए, इंडिया हैज अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट based on Westminster model, तो यूके मॉडल को वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, बेस्ड ऑन वेस्टमिनिस्टर मॉडल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, देखिए, इन वेस्टमिनिस्टर मॉडल the head of the state is always a ceremonial figurehead. In Westminster model, the head of the state is always a ceremonial figurehead. Next point, in such model, the real power lies in the Council of Ministers headed by the Prime Minister. In such model, the real power lies in the Council of Ministers headed by the Prime Minister, PM. Yeah, okay. In Indian case,
अब लिखिए, इन इंडियन केस the president is indirectly elected. The president is indirectly elected. The president is indirectly elected. And it has opted parliamentary form of government. It has opted parliamentary form of government. Okay. In the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar said that the president represents the nation. In the Constituent Assembly, Ambedkar said that the president represents the nation but does not rule the nation. The president represents the nation but does not rule the nation. Right? Next point, the Supreme Court in Ram Javaya Kapoor. The Supreme Court in Ram Javaya Kapoor The Supreme Court in Ram Javai Kapoor case 1955, in R.C. Cooper case 1970, in R.C. Cooper case 1970, अलग अलग जजमेंट है, जजमेंट एक ही है. In R.C. Cooper case 1970, ऊपर वाला है 1955, and Yuan Rao case 1971, and Yuan Rao case 1971 held that India has opted parliamentary form of government. India has opted parliamentary form of government, which is a replica of British model, which is a replica of British model, in which the head of the state like president is only a formal or constitutional or ceremonial figurehead The real power is exercised by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. The real power is exercised by the Council of Ministers headed by the Prime Ministers. So that position of the President we have discussed. समझ में आया? Right? रेस्ट जो है इलेक्शन और फिर रिमूवल, उसके बाद बहुत सारे पावर है उनके पास, राइट, लाइक वीटो पावर, पार्डनिंग पावर, है ना, दैट विल डिस्कस टुमारो. If you have query, then I'll take up.
अदरवाइज Sir, यस बोलिए. sir, what is the difference between the financial bill 2 and this money bill? Sir, because the financial bill involves expenditure from the consolidated fund or Hmm. receipts, Hmm. and Hmm. these provisions are also there in the money bill. So, what Hmm. is the difference which देखो makes it? देखो क्या है, टेक्निकलिटी में आपको शायद इकोनॉमिक्स वाले टीचर ज्यादा हेल्प करेंगे. I'll explain you what is the basic difference between financial bill 2 and money bill कहा ना. Yes, sir. राइट. देखो मनी बिल क्या है. मनी बिल ऑलरेडी आर्टिकल 110 क्लॉज 1 जो डिफाइन करता है, जो जो पर्टिकुलरली फिक्स चीज है वो मनी बिल है. मनी बिल इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फाइनेंशियल बिल. राइट. जो मामला यहाँ का नहीं है बट इससे रिलेटेड है तो वो फाइनेंशियल बिल 1 हो जाएगा. बट जो मामला यहाँ का नहीं है और इससे मतलब भी नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड फाइनेंशियल बिल 2. प्रियांश. No, sir, but in the money bill, the receipts of money from Consolidated Fund of India are हम्म. there, हम्म. or and expenditures charged on the Consolidated Fund of India are also there, हम्म. that are in हाँ. the financial नहीं bill नहीं नहीं. too. फाइनेंशियल बिल 2 में एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. Oh, that you are saying. Expenditure Financial bill from, to consist expenditure from हो सकता है, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन नहीं हो सकता है. राइट. अब उसका कस्टडी नहीं हो सकता. और दूसरी बात हो सकती है, मैंने क्या कहा कि आर्टिकल 110 क्लॉज 1 जो स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करता है, अगर वो मैटर होगा तो वो मनी बिल होगा, अदरवाइज वो मनी बिल नहीं होगा. फर्दर okay. स्पीकर डिसाइड करेगा कि भाई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है कि नहीं है. फॉर आइडिया. Yes, sir. तो आज यहीं तक, मिलते हैं कल. और आई होप एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा इस वीक में एंड आई विल बी एबल टू फिनिश योर पॉलिटी इन द नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा. अगर हमें चाहिए हुआ तो आई विल टेक 2 मोर क्लासेस, 2 or 3 मैक्सिमम. चलो, दिस सैटरडे यू विल हैव टेस्ट ऑन पार्लियामेंट. चलो, सी यू देन. बाय बाय.